Cloud. I got the message, few of you, not few, maybe only one, that did not understand what was the explanation. Maybe because the person has joined late. So I would request to watch the previous videos and this video also. So you will understand. People who were there in last video and today's session, do you guys have any doubt, any question, did not understand? Do you want me to explain again? Anything? I'm trying to understand. Is it just because the person did not attend the session, or is it the explanation was not up to the mark? I'm trying to understand. So feel free to say if you did not understand. I'm happy to repeat it. Basically, it might be joining in late. I mean, to say due to the link. No, I'm asking people who joined, who are there in last session, in today's session. Do you guys have any doubt? Please feel free to speak. If you did not understand, you can text me on Zoom, just to me in personal also. You did not understand. Any doubts, any question? If you are not comfortable just speaking here, you can. And guys, this is only for, I encourage messages only for doubts, right? But whenever I'm asking you questions, technical questions, I never encourage that you start giving answers in chat window, because your interviewer is not going to ask you, not going to give you opportunity to answer in chat window. There you will have to speak. So I want to see how do you speak, how do you give a technical answer, how many jargons are you skipping, how many jargons are you using, right? Are you going out of track? What are you doing? I need to understand that. I need to learn that so I can work again. I can work on that, right? So whenever I'm asking technical questions, I'm not at all encourage answering in your chat window unless you have mic issue, etc. That too cannot be forever. If you have mic issue, please fix it before joining the classes, right? Chat window you use if you're hesitating to speak. Like in first session, I said I'm happy to explain it in Hindi, Marathi, any other language which I know, because here it's not a language course, it's not a language requirement. टेक्निकल क्लैरिटी होना ज्यादा जरूरी है. सो इफ यू आर हेजिटेटिंग कि आपको ये बोलना है यार इस चीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दो प्लीज, if you don't want to do that over the call, then you can text me on WhatsApp also, group में personally, Zoom पे, you can do that. Feel free to do that. But when it comes to technical answer, do not answer in the chat window, guys. और अगर repetition के लिए भी है, so there is no hesitation, guys. There is no silly question. कोई hesitation की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, right? So if you have any doubts, please let me know now. Only on this topic. I'm not talking about curiosity होती है कि आगे वाला क्या होगा. Not talking about the topics which we have not covered. I'm talking about the topics which we have covered today, which is just cloud. What is cloud? Is it clear to everyone? Yes. Yes. Yeah. Okay. And a technical definition or the bookish definition is here. You can always refer to this. The cloud refers to servers or services which companies use via internet. Services like IT infrastructure में सब कुछ आ गया आपका, storage, networking, etc. Software, virtual machines, storage, etc. So you can give this answer, or you can explain whatever I have explained. You can explain that in your words. It doesn't have to be exactly like what I did, how I did. It can be in your own words. Your interviewer is interested in knowing the concept, whether the concepts are clear for you or not the definition. Engineering student fresher से definition, bookish definition accept हो जाता है. But if you are showing, if you are portraying, if you are presenting that you have worked for 3 years, 4 years in Azure, और तब आप ऐसा bookish सा definition दोगे, तो वो थोड़ा सा doubt आ जाता है. That has this person really worked on Azure? Has this person really worked on cloud? Okay. So then I hope this question is clear. I'm gonna include this question and I'll send it to you guys. 4 या 5 questions मैं दे दूंगा आज, and tomorrow will at the beginning itself we'll start taking answers from you. I'll pick random people, and that is the time I'm talking about. That time I do not want anyone to answer in chat window. I want to see how you give a technical answer, and then only I'll be able to help you. Because understand, guys, the whole aim of this training is, I have explained it on day one, to focus on clearing the interview, and you should be able to do the job when you get the job, right? This is the only focus. I was very blunt and clear and upfront about it, very transparent about it, that do not have expectation कि मेरा ये training course करने के बाद आप लोग
AZ104 का सर्टिफिकेशन क्लियर कर लोगे. नो, आई एम नॉट टीचिंग यू इन दैट मैनर, नॉट एट ऑल. सर्टिफिकेशन की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है. इफ समवन वांट्स टू डू सर्टिफिकेशन, गेट इन टच विथ मी. आई विल मेक श्योर दैट पर्सन गेट्स पास. विल डू दैट, डोंट वरी. बट बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग, डू नॉट थिंक कि आप सर्टिफिकेशन क्लियर करने वाले हो. एंड सर्टिफिकेशन के जो डम्स है, आई कैन शेयर इट विथ यू गाइस. Based on those terms, do not think you will be able to clear the interview. These are two separate matters. But clearing the interview has more weightage. If you have a certificate and you cannot speak in your interview, no one is offering you a job just because you have a certificate. But if you do not have a certificate but you are able to clear the interview, trust me on this, you will get the offer and they will ask you, यार join करने से पहले certification कर लेना. और after joining within a week certification कर लेगा, we will reimburse. Companies have been doing that. So technical interview, technical knowledge, the way you present, the way you express that has it has more weightage, way more weightage compared to your certificate. So don't worry about the certificate. Still, it's a good thing. Certification, it's a good thing. I'm not denying that you should not do the certification, right? But then don't get confused. This training is not going to help you with certification. So as the cloud is clear, right? And the cloud definition, it applies to everywhere. It applies to Azure, it applies to AWS, it applies to GCP, Alibaba, जितने भी cloud provider है, सबके definition same होगी, the one which I explained or the one which is written here, right? Now let's go to the types of cloud, which is also known as deployment models. So you make it a question, what do you know about the deployment models in cloud? Or what kind of deployment models have you worked on cloud, right? Or can you tell me something about deployment models in cloud? Or what are the types of cloud? Simple भी आ सकता है. So make sure you remember this jargon. Is this clear, guys? Is the question clear? I'm coming to answer. Is the question clear? कितने Yes, methods में आ सकता है? Right? Yes. yes. Okay. So now, if we go to answer, there are three deployment models, or there are three types of cloud. One is public cloud, another one is private cloud, the third one is hybrid model. Right? Don't just simply assume कि public और private को मिला के hybrid बन जाता है. It's similar, but I'll come to that. But don't just assume. In technical, guys, do not assume anything. Everything is written there. You can explain that in your words, but don't assume things. सिर्फ नाम को लेकर assume नहीं करना होता है कभी भी. Okay. So what is a public cloud, guys? A public cloud is where resources and the hardware are owned and maintained by cloud provider. Hardware is shared with multiple companies and tenants. Now, what is tenant? I'll discuss that later. But companies को ही tenant बोलते हैं, ठीक है? Exactly technical definition क्या है tenant का? We'll come to that. Where hardware is shared with multiple companies or tenants. Lower cost, no maintenance, near unlimited scalability and high reliability. Can someone explain what is scalability? I will explain all these 3 points. I want one of you to explain what is scalability. Not in terms of Azure, not in terms of technical, just simply English word. What do you understand by scalability? Capacity? Could you elaborate? Capacity is something different. Scalability would be based on the requirement. If I need more, I can take more. If I need less, Upgrade, downgrade, that's up and down. Yeah, simple. Perfect. Yes, exactly, guys. Scalability, that something, it is scalable. For example, your Tata Sky. It's not necessary that you have to take all 500 channels from day one till the time you submit your connection. You can start with 200 channels. Next month, if you want, कि यार IPL आने वाला है, maybe some channel is supporting that. I want that channel, or maybe that app I want in my package. I will include that. After that, you think कि काफी पैसा जा रहा है, I'm not even watching it. I want to reduce to 50 channels. That is your scalability. Is this clear, guys? What is scalability? So basically, it means like what RAM or what storage you We'll want. come to that. We'll it is come to up that. to you. Ashfaq bhai, we'll come to that. Don't worry. We'll come to that कि यहाँ पर Azure में scalability कैसे explain करना. We'll come to that.
Is the word scalability clear to all of you? Yes. Right. Yeah. Reliability. I mean, it's very simple. Who can just give me answer in one? Again, not related to Azure, not related to cloud. Simply, what is reliability? भरोसेमंद. Perfect. Right. Now I will explain it to you how it fits in Azure. What Ashfaq was explaining will come that. But let's come from here. Now, public cloud is where resources. What could be the resources? Can you guys name few resources in a data center? Rack server. Perfect. RAM. Perfect, perfect. You got it. Yes. It's okay if you don't remember, it's okay. But the concept should be clear. When I say resources, ये सारी चीजें इसके resources होते हैं. ISP, cables, racks, etc., server, storage, building, right? Everything उसमें लगा हुआ AC, बाहर रुका हुआ कुत्ता, उसका security guard, everything is resources, right? So public cloud where the resources, hardware are owned and maintained by the cloud provider. So Azure, what do you think? What kind of provider it is? Is it a public, private, hybrid? What is it? Please. Public. Public. Because Azure के resources पे आपका कोई right नहीं है, कोई control नहीं है. The resources are completely owned by Microsoft, right? Similar with AWS and GCP. So that is first section. Is it clear to everyone? Yes. Second, hardware is shared with multiple companies and tenants. It's a similar thing. That is the reason I've put slash, right? So when I say hardware is shared, what do you understand by this? This the topic may take some time because I will introduce virtualization here. But still, can someone explain what do you understand by shared? So it could be mean that the one single server, there would be a multiple companies who will use that particular server, but they have a different services, right? But that totally handle on the one particular server or one single server. Perfect. It's a good explanation. Anyone else would like to try? Or it's okay, let me do that. It's like multiple users on one single machine. Could say, but not literally. Let me explain it to you guys. Again, I'm going back to very initial days of technology, servers, etc. So how it used to be, let's say I want to run an application, right? Swiggy, again, let's say Swiggy I want to run. I need multiple servers. As of now, I'll just start with one server, just with one server. Though it's always, we always require multiple servers, but we'll start with one server. So I want to run an application, right? And for that, I require server. So this is my server where I'm going to host my application named Swiggy. Right? Please excuse me, guys, for this if this is taking some time. The legacy MS Paint got uninstalled somehow. I was trying to get that installed, did not work. So I'm trying to manage with this one. Okay. This is my Swiggy server, and I have hosted the application. All my users, etc., all of them are coming here and they are availing services from this server. I told you multiple servers will be there, guys, right? But as of now, just to avoid confusion, I'm taking one server. Okay, so imagine these are my users. And then there are staff, etc. Last time we discussed, if you guys remember, right? Yes, guys, is it clear to everyone? Can you recall it? Or what are staffs? What are administrator? Do you guys remember that session? Yes. Okay. Just 1 second, please. Trying to add a text box here. Somehow it is. Select track Fine, let it T. be. Oh, you understood, right? Yeah, I clicked on T. I'm getting the text box also. No, somehow. right corner T. Text T. Let it be. Right, before next session, I try to get the legacy, this one here. Right. So
These are my users, guys, right? These are my users, and this is my server. So what is happening? Thousands of users are using the server. This is very strong server because I needed that. So what have I done here? I have taken a server with 2 TB of hard disk, right? Because I anticipated that 2 TB of hard disk I will require. 2 TB of hard disk I have taken it. Then I have taken 248 GB RAM. You will literally see, okay, and 248 GB physical servers पे, if you have worked, anyone is from data center, they will see 200-300 GB का RAM. I'm not talking about a hard disk. 200 GB का RAM आपको दिखेगा. 500 GB RAM का भी सर्वर आपको दिख जाएगा. Physical server I'm talking about. ठीक है? So this is the server I have taken. But what is happening here? What is happening, guys? That I anticipated some business. My application is working fine, but it's not working that great. So ये जो 2 TB का सर्वर मैंने मंगाया था ना, इसमें से I realized that सिर्फ अगर ये भी होता है ना, what you say 1 TB, right? This is capacity is 2 TB and I am using 1 TB. ये 1 TB भी कब यूज कर रहा हूं मैं? When I have everything fulfilled, सब कुछ एक्स्ट्रा बैकअप वगैरह सब कुछ मिलाकर my users जो peak hours है सब कुछ मिलाकर I'm using 1 TB, not more than that, right? When it comes to RAM, I said कितना RAM है मेरे पास? 240 GB का RAM है. So if I have 240 GB RAM here, out of that 240 GB, let's say 250 GB, 50 GB RAM, it's my capacity. But how much am I using? मेरा जो सर्वर रिपोर्ट निकलता है उस सबसे मुझको पता चला that I'm hardly using 150. तो 100 GB का RAM and half TB or 1 TB का hard disk, it is being wasted. But can I do something about it? नहीं, because I purchased 2 TB का hard disk. मैंने एक पूरा का पूरा एक हार्ड डिस्क इसको परचेज कर लिया था 2 TB का, राइट? और 250 का एक पूरा का पूरा रैम स्लॉट मैंने परचेज कर लिया. नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड चलो अगर आई इमेजिन इफ आई से कि मैंने 100 के 3 स्लॉट्स खरीदे थे और 100 के 2 और 50 का एक स्लॉट खरीदा था और यहाँ पर 1 TB के 2 डिस्क खरीदे थे. इवन इफ आई कैन रिमूव देम, तो मैं इसको निकाल कर क्या लूंगा? इधर आई विल हैव टू सेल देम, जहां पे मुझको 50% आएगा प्राइस उसका. एंड इफ आई वांट टू यूज इट अगेन, तो इनको मैं ब्लाइंडली कहीं पर हवा में तो यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट? व्हाट डू आई नीड? वेयर डू वी फिट दिस रैम एंड हार्ड डिस्क वगैरह? कहाँ फिट करते हैं हम लोग? यस यस, वेयर डू वी कनेक्ट ऑल दिस? डू यू हैव एनी आइडिया? आपका रैम जहां पर फिट होता है लैपटॉप का, पीसी का, व्हाट डू यू कॉल दैट? जो पिक्चर मैंने बताई थी, मदरबोर्ड. परफेक्ट. Is it clear, guys? Everyone, what is a motherboard? Yes. This one, the one which I showed you, right? तो इसमें से अगर मैंने 2-4 रैम निकाल भी लिए, ठीक है, यहाँ से let's see, these are RAM slots, these are not RAM, okay? ये रैम स्लॉट्स है. तो इसमें 6 के 6 भरे हुए थे, बट आई रियलाइज कि मेरा सर्वर 3 में ही चल रहा है, राइट? और ये 4 प्रोसेसर में से 2 पे ही चल रहा है. एक हार्ड डिस्क लगी हुई थी उसमें 1 TB मैंने निकाल भी लिया. कैन आई यूज इट? नो, आई विल रिक्वायर अनदर मदरबोर्ड. मतलब पूरा का पूरा एक पीसी लगेगा मुझको. ये मदरबोर्ड ऐसे ही कहीं पर लटक तो नहीं जाएगा, राइट? इसके लिए कैबिनेट लगेगा, वो सर्वर का सब कुछ ये लगेगा. देन इट इज ऑफ नो यूज. जो मैंने परचेज कर लिया, इट इज ऑफ नो यूज. इस तरह से लेगेसी सिस्टम हमारा होता था. और अगर लेट्स से मैं इसको कम परचेज करता हूं, मैं इनिशियली 1 TB की जगह 500 GB परचेज करता हूं, और अगर एप्लीकेशन अच्छे से चल गया, देन उसको इंक्रीज करना अपने आप में एक टास्क होता था, बिकॉज यू नीड सर्वर डाउन टाइम वगैरह, वो बहुत सारी चीजें होती थी, राइट? सो वो बहुत बड़ा इश्यू होता था हमेशा. देन केम टू पिक्चर अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. इसका सबसे बड़ा प्लेयर है VMware. VMware is a company. Now it has been taken, उसका एक्विजिशन हो गया है, ब्रॉडकॉम ने लिया है केस, बट VMware still people know it by VMware, काफी यूज नाम है. VMware is the company. They brought virtualization into picture. Virtualization ने क्या कर दिया? ठीक है, आपका एक ही हार्डवेयर रहेगा. इस हार्डवेयर पे, इस सर्वर क्लास हार्डवेयर पे, व्हाट यू यूज टू डू अर्लियर, इसके ऊपर इस सर्वर क्लास हार्डवेयर पे, गाइस आई एम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार स्पेसिफिकली सर्वर क्लास हार्डवेयर बोल रहा हूं, बट अंडरस्टैंड, नो वन यू वॉन्ट हियर इट. तो कहीं इंटरव्यू में जाके कोई सर्वर बोल रहा है, तो डोंट पॉइंट आउट द इंटरव्यूअर दैट व्हाई डिडंट यू से सर्वर क्लास हार्डवेयर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस के लिए हम इसको वर्ड यूज कर रहे हैं. ग्रेजुअली वंस यू गाइस आर कंफर्टेबल, इवन आई विल मूव टू सर्वर. सो ऑन द सर्वर क्लास हार्डवेयर, गाइस, ये जो सर्वर क्लास हार्डवेयर है, इसके ऊपर पहले क्या इंस्टॉल होता था? इफ आई वांट टू यूज माय एप्लीकेशन, स्विगी जो है डायरेक्टली वो रैम पे नहीं चलेगा, राइट? इफ आई वांट टू हैव माय एप्लीकेशन,
लेट मी कम टू योर फोन का एग्जांपल। आप एक फोन लेकर आ गए, राइट? एंड्रॉइड फोन आप लेकर आ गए, एंड्रॉइड एप्पल विच एवर फोन यू हैव टेकन, राइट? एंड यू वांट टू इंस्टॉल स्विगी एप्लीकेशन ऑन दैट। Can you directly install a Swiggy application on a hardware of a phone? Or do you require anything between Swiggy और आपके फोन के हार्डवेयर के बीच में क्या चीज होती है? User interface, operating What do you system. call that? Operating system, Operating. right? Android आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से कंप्यूटर्स में we have Windows 7, we have Linux, we have Mac, ये सारे आपके क्लाइंट हैं और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यू रिमेंबर आई टॉक अबाउट सर्वर क्लास हार्डवेयर एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनिशियली गाइस यहां पर आपका इंस्टॉल होता था सर्वर ओएस, सॉरी, यहां पर आपका होता था इंस्टॉल सर्वर ओएस। लेट मी क्रिएट अ लेयर फॉर यू। ऑन दिस सर्वर क्लास हार्डवेयर क्या इंस्टॉल होता था आपका? सर्वर ओएस। एंड ऑन दिस एप्लीकेशन, सॉरी, ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम योर डेवलपर्स विल गो एंड डेवलप सम एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है? बाकी ये सारे इश्यूज देन जैसे कि वैसे ही विच आई एक्सप्लेन, कि अगर यहाँ पर हाफ यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, इट्स कंप्लीटली गॉन। इज इट क्लियर गाइस स्टिल हियर? Yes. Yes. ठीक है, 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। सो नाउ वर्चुअलाइजेशन जब आया पिक्चर में, सो व्हाट डिड दे डू? वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी आई, दे सेड on your server class hardware, do not install your operating system. Instead of operating system, what should you do? You should install our hypervisor layer. It is called hypervisor layer. Okay, it is called hypervisor layer. So they said install our hypervisor layer. What will happen? Let me explain it to you. So now अब इस सर्वर पे हमने hypervisor layer इंस्टॉल कर लिया। Now this hypervisor layer gives you the functionality or ability, right? ये अगेन सॉफ्टवेयर है गाइस, कोई हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ऊपर एक और हार्डवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, अंडरस्टैंड? हार्डवेयर हमारा वही है, अब इसके ऊपर हम लोगों को फंक्शनैलिटी या एबिलिटी मिल गई दैट आई कैन हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां पर मैं सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता था, नाउ आई हैव द ऑप्शन कि मैं यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम 1, ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ऑपरेटिंग सिस्टम 3, इस तरह से मैं इसके ऊपर n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये कर सकता हूं। बट व्हाट इज द कंडीशन? एक शर्त क्या होगी उसकी? ठीक है, आप n नंबर कर लो, लेकिन उसकी टोटल कैपेसिटी इतनी ही है। सो इफ आई हैव 150 जीबी, सॉरी 250 जीबी, राइट? एंड मैंने 250 जीबी में से वर्चुअलाइजेशन के पहले सर्वर को, आउट ऑफ 250 जीबी वर्चुअलाइजेशन के पहले सर्वर को, पहले वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को, इफ आई असाइन 200 जीबी, तो कितना रैम रह गया मेरे पास? 50 जीबी। 50 में से सेकंड वाले मशीन को आई असाइन 25 जीबी। हाउ मच एम आई पेंडिंग विथ? 25 जीबी। थर्ड मशीन को आई हैव असाइन 25। व्हाट रैम एम आई पेंडिंग विथ? 0। नाउ जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग यू कैन हैव n नंबर ऑफ मशीन्स, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू हैव द फोर्थ मशीन? अगर मेरे 3 मशीन का कॉन्फ़िगरेशन ये है कि मैंने तीनों मशीन के डिवाइड में ही 250 जीबी जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसको यूटिलाइज कर लिया, डू यू थिंक आई कैन हैव फोर्थ मशीन गाइस? No. No. नो, राइट? सिमिलरली यहां पर जो 2 TB है, मैंने यहां पर 500 जीबी दे दिया, यहां पर 500 जीबी, दोनों मिला के 1 TB हो गया, 500 जीबी 500 जीबी। सो इज देयर एनी स्कोप क्या मैं फिफ्थ मशीन होस्ट कर सकता हूं यहां पर? नो, देयर इज नो स्कोप। वन मोर एग्जांपल जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू गाइस। इस 250 जीबी में से मैंने 4 मशीन को, 250 जीबी में से मैंने ईच मशीन 25 दे दिया, ठीक है? 25 टू ईच मशीन, टोटल 4 मशीन। सो हाउ मच एम आई लेफ्ट विद गाइस? 250 में से मैंने 100 जीबी मशीन, 100 जीबी रैम यूज कर लिया, ठीक है? बिकॉज सब हर एक को मैंने 25 जीबी दिया। सो आई एम स्टिल पेंडिंग विद 150 जीबी। एंड नाउ आउट ऑफ दिस 2 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, 2 TB मतलब कितना जीबी होता है? एनीवन नोस? यस गाइस? 2000. 2000. नॉट रियली, 2048, 1024 का 1 TB होता है। इट कुड बी एनीथिंग, Yes. 1024 1 MB का 1 GB होता है, 1024 GB का 1 TB होता है, राइट? सो ठीक है, बट इट्स अ गुड केस।
2048 MB है। अब इसमें से मैंने 1500 जो है कैपेसिटी किसी तरह से इसको असाइन कर दिया। सो आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 150 GB रैम एंड 548 GB का हार्ड डिस्क। सो आई स्टिल हैव अ स्कोप कि मैं इसके ऊपर 5th मशीन बना सकता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, वन पॉइंट यहां पर एग्जांपल में मैंने एग्जैक्टली इक्वल बताया, दैट डज नॉट मीन यू हैव टू असाइन इक्वली। व्हाट आई कैन डू कि मैं यहां पर इस सर्वर को 100 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क दे देता हूं। व्हाट एम आई डन पेंडिंग विद? 100 GB रैम मैंने ऑलरेडी दे दिया, लेट्स से 150 GB रैम दे दिया, और 1 TB मैंने ऑलरेडी फर्स्ट मशीन को दे दिया, बिकॉज दिस इज माई हैवी मशीन। आई एम remaining with I'm then pending with just 150 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क। इसको मैं किसी भी तरह से असाइन कर सकता हूँ। इसमें मे भी 100 GB मैं इसको दे दूं, देन आई एम पेंडिंग विथ, अगर 100 GB मैंने और दे दिए, 50 GB, 50 में से मैं इसको 40 GB रैम, इसको 10 GB दे सकता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एग्जाम्पल में मैंने इक्वली दिए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट देर इज नो कंपल्शन। आपकी मर्जी, आप जिसको जितना देना चाहो दे सकते हो, प्रोवाइडेड इसका टोटल आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, विच इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। आपके पास है ही टोटल 250, तो आप इसको 250 इसको 250 नहीं दे सकते हो। इज दिस क्लियर गाइस? ओके, वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस, इनिशियली अगर मैं डायरेक्टली इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता था, तो इतने बड़े सर्वर पे either I can have Windows or I can have Linux. But now after virtualization, इसे physical server को use करते हुए I can have one Windows, one Linux, one Windows, one Linux, 3 Windows, 1 Linux, जो भी मुझको चाहिए इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम whichever you want. वर्चुअलाइजेशन सिर्फ क्या कर रहा है? वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं कर रहा है, बस वो आपके हार्डवेयर को जो है वो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से वो डिवाइड कर रहा है, सिंपल। जिस भी तरह का डिवाइड आप बता रहे हो उस तरह का वो डिवाइड कर रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा, वॉट एवर डिवाइड यू वांट, जिस भी तरह का डिवाइड आप बोल रहे हो उस तरह से वो उस रिसोर्स को डिवाइड करना है। इज दिस क्लियर गाइस टू एवरीवन? Yes guys, yes, no, any doubt, any questions? Are you able to hear me guys? Yes, no, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Is it Yes, clear? yes, we can hear you. What Yes, about others? Yeah, mostly. No, you can hear. Is it clear to you? The concept of virtualization guys, is it clear? टेक्निकल और Yes, इसमें sir. नहीं जाने वाले हम लोग, बिकॉज नॉट योर जॉब। I'll explain it to कि आपका जॉब क्यों नहीं है वो। Is the concept clear guys? yes. Okay. Now virtualization के कुछ प्लेयर्स के नाम मैं बता देता हूँ। You don't have to worry about it, आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी नहीं होगा, but just for the knowledge. वर्चुअल मशीन, VMware, इट्स अ कंपनी, उनका प्रोडक्ट है VM हाइपरवाइजर। जो है एक टर्म है, ओके, हाइपरवाइजर इज अ टेक्निकल टर्म, ये सबके लिए यूज होता है। लेट मी ओपन नोटपैड, आई जस्ट मेक इट क्लियर फॉर यू। तो ये आपके इंटरव्यू वगैरह में कहीं नहीं आने वाला है, बट यू शुड नो, बहुत ही बेसिक चीज है, कहीं पर डिस्कस हो जाए और नहीं पता हो तो यू वोंट इवन बी एबल टू जस्टिफाई कि कैसे नहीं पता है। ओके, हाइपरवाइजर गाइस, इट्स अ प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द दिस वन caps etc. Okay, hypervisor is a technical term for virtualization, जो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसकी ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड हाइपरवाइजर लेयर। ओके, अब हु प्रोवाइड्स दैट, लाइक हमने क्लाउड वगैरह में देखा था, वैसे VMware इज अ कंपनी, राइट? VMware इज अ कंपनी, इनका vSphere एक प्रोडक्ट है जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, राइट? देन वी हैव मल्टीपल है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट टू ऑफ देम। वन इज VMware, another one is again Microsoft. Okay. Microsoft. What is the name of Microsoft's product? Anyone knows? Anyone from Windows background, data center background, guys? Hyper-V. Hyper-V, perfect. Yes, Hyper-V expected from you. ठीक है, don't get confused between hypervisor and Hyper-V. Hyper-V product का नाम है, right? Microsoft कंपनी का है। VMware कंपनी है, इसके प्रोडक्ट का नाम vSphere है, बट ये सब ओवरऑल है क्या? दिस इज हाइपरवाइजर, दीज आर हाइपरवाइजर, राइट? हाइपरवाइजर क्या करता है? आपको वर्चुअलाइजेशन करने में असिस्ट करता है, वो हेल्प करता है। बट व्हाई यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट इट? Because when you create a machine on Microsoft or you do something, you do not take care of hypervisor. Okay, Microsoft Azure जो है इसका वर्चुअलाइजेशन वो अपने लेवल पे करेगा,
you won't even come to know. So coming back to this one, ये जो सर्वर है इस पे आपका ऑलरेडी हाइपरवाइजर इंस्टॉल है कोई, दो माइक्रोसॉफ्ट डजंट शेयर, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली इज यूजिंग हाइपर-वी। माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट VMware का जाकर प्रोडक्ट नहीं यूज करने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर के जितने भी डेटा सेंटर्स है, उसके फिजिकल सर्वर्स को वर्चुअलाइजेशन वे में कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, यूजिंग हाइपर-वी। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट हैव टू ट्रबल शूट इट। आपको कुछ करना ही नहीं है उसके बारे में। उसको किस तरह से डिवाइड करना है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी कर रखा है। यू जस्ट हैव टू टेल माइक्रोसॉफ्ट। वो हम सीखेंगे व्हेन वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, फर्स्ट वर्चुअल मशीन जब अपनी बनाते हैं, वी लर्न दैट कि हाउ वुड यू टेल माइक्रोसॉफ्ट कि मुझको 10 GB रैम चाहिए, मुझको 20 GB रैम चाहिए, राइट। इसका टेक्निकल सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा है, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मैंने इतना क्यों एक्सप्लेन किया यहां पर। नाउ hardware is shared with multiple companies. Now is this point clear? What do I mean by that, or what do they mean by this? कि ये जो हार्डवेयर है गाइस, ये जो सर्वर है, राइट, जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन वन सर्वर फ्रॉम अज्योर, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर के आप ओनर हो गए। समवेयर हियर में भी आपकी मशीन इंस्टॉल्ड है, समवेयर हियर, ओके। लिटरली ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे कोने में कुछ नहीं होता है, जस्ट फॉर द पिक्टोरियल पर्पस आई एम एक्सप्लेनिंग इट। लेकिन ये इतना सर्वर खाली पड़ा है। So now, if I take a server here, right? Tomorrow Ashfaq decides to open a company, he wants a server. So his server may go on any of these servers, or it can also come on my server. But मुझको नहीं पता चलेगा कि मेरे सर्वर पे और किस किस कंपनी के हैं। वो आइसोलेशन माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा है। Just because we are sharing one hardware, that does not mean Ashfaq can see my server or I can see Ashfaq servers, right? Maybe some another day, right? Prabhat thinks he wants to open a startup. He also open one server. He also rent a server. वो server यहाँ पर आ जाएगा. But neither Ashfaq can see his server nor he can see Ashfaq server. ना वो मेरा देख सकते हैं ना मैं किसी का. इस तरह से एक सर्वर पे मल्टीपल हो सकते हैं. You won't even come to know कि उस हार्डवेयर की कैपेसिटी कितनी है और कितना खाली पड़ा है. You don't have to worry about it. Microsoft will make sure that if you have asked for 10 GB RAM and 1 TB hard disk, you get that. अब वो आपको यहां से मिले, इस सर्वर से मिले, इस सर्वर से मिले, इससे मिले, it doesn't matter. You don't come to know. You have no say on that. Is this clear, guys? Yes. Yes. Okay. Yeah. Though there is an exception, हर चीज में exception होता है. There is an exception that a term called reservation, उसको हम बाद में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। Where you can say कि भाई ये सर्वर आप मेरे नाम पे रिजर्व कर दो, अब इसमें मैं एक मशीन लूं या 10 लूं, but that time what will happen guys, यहाँ पर जो एक वर्चुअल मशीन का आप अगर 1000 रुपए मंथली पे कर रहे हो ना, तो यहाँ पर यू हैव टू पे 10,000, वाई? क्योंकि आपने उनका पूरा सर्वर रेंट पे ले लिया। अब आप उसमें अपनी मशीन होस्ट करो या ना करो, सॉरी, सो इट इज एज गुड एज अगर पीजी वाला कॉन्सेप्ट और रेंट वाला कॉन्सेप्ट आपने पूरा फ्लैट रेंट पे ले लिया, अब आप उसमें एक लोग रहो, 4 रहो, यू हैव टू पे द रेंट। हियर यू आर एक्टिंग एज अ पीजी, आपने एक बेड लिया, यू विल ओनली पे फॉर दैट बेड। अब रिमेनिंग बेड पे कोई आए या ना आए, यू डोंट केयर अबाउट इट, यू डोंट वरी अबाउट इट। इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? Yes. Yes. Any Yeah. doubts, any questions? So this point is clear to everyone. The public cloud में when they say hardware is shared with multiple companies, this is what they are trying to say. ठीक है। लोअर कॉस्ट, क्यों लोअर कॉस्ट होगा? क्योंकि आप लोग उसको परचेस नहीं कर रहे हो। नो मेंटेनेंस, क्यों नो मेंटेनेंस होगा गाइस? बिकॉज इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी। उसमें आग लगती है, कुछ होता है, नन ऑफ योर बिजनेस। नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, व्हाई इज दिस सेइंग दैट? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि अगर आपने आज 4 GB रैम का सर्वर ले लिया, sorry, immediately next hour you can ask for 8 GB RAM. Azure won't say नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, not possible, because they have worked very clearly on their technology. Let's imagine कि अगर इस सर्वर में सिर्फ 4 GB की कैपेसिटी है और आपने 4 GB का ले लिया, और immediately next hour if you are asking कि नहीं यार मुझको 4 GB बहुत कम हो रहा है, मुझको 16 GB दे दो। अगर इस सर्वर की कैपेसिटी नहीं भी है, राइट, इस सर्वर की कैपेसिटी नहीं भी है 16 GB देने की, तो Azure will move your machine from here to this server, जहां पे 16 GB की कैपेसिटी है वहां पर मूव करेगा, and you won't even come to know most of the time. There are few things जिसमें मशीन रीस्टार्ट होती है, there are few things जिसमें नहीं होती है, and these are very crucially asked interview questions कि कौन से एक्ट्स में वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगा, कौन सा हम विदाउट डाउन टाइम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंपैक्टेड टू बिजनेस।
वर्चुअल मशीन डाउन होने का मतलब है मेरा स्विगी का ऐप डाउन होगा, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, मतलब मेरा करोड़ का नुकसान होगा 1 घंटे के लिए, राइट? तो वो हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल एटसेट्रा, उसका तब हम करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर कि Yes. क्यों स्केलेबिलिटी मिल रही है? बिकॉज Azure will help you to do that, right? And reliability क्यों है? बिकॉज Azure is giving you SLA, इसलिए आप रिलायबल हो कि ठीक है मुझको SLA मिला है, Azure will make sure कि ये सब चले। कि now coming back to our question, types of cloud deployment और deployment models। तो एक है public cloud हमने काफी डिटेल में देखा। then next one is your private cloud। private cloud is what guys? It's very simple। private cloud जो है, just 1 minute guys, simultaneously I'm writing all these things so it's easier for me to make the questions etc and to name the sessions, and it will be easier for you guys, right? To search the session. So private cloud is nothing. Private clouds where the resources hardware is used dedicatedly by one company। अभी अगर स्विगी का डेटा सेंटर है तो स्विगी इसको क्लाउड टाइप में भी यूज कर सकता है। हाउ? कि उस पे कंप्लीटली उसको टीसीएस को दे दो कि यार इसमें मेरा कोई स्टाफ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, यू टेक केयर ऑफ हार्डवेयर, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप करो, आप मुझको बस मंथली एक अमाउंट बता दो टीसीएस वेल से, ठीक है ये सर्वर है, ऐसा है वैसा है, आपको 10 लाख पे करना है ना। उस 10 लाख में उस वो अब अगर डाउन होता है कुछ होता है देन टीसीएस विल टेक केयर ऑफ दैट। इंसिडेंट बेस पे स्विगी को उसमें पे नहीं करना पड़ेगा। दो टीसीएस डजंट प्रोवाइड प्राइवेट क्लाउड गाइस, मैं बस एग्जांपल के लिए नाम बता रहा हूँ, ठीक है? टीसीएस ऐसा कोई प्राइवेट क्लाउड वाला सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है? बट अगर वो स्विगी के अंडर होगा सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी इंसिडेंट, ठीक है? इवन इफ दे आउटसोर्स दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे। बट अगर पब्लिक क्लाउड अगर हम बोलते हैं, सॉरी प्राइवेट क्लाउड अगर हम बोलते हैं, तो दे विल आउटसोर्स इट। देयर आर मेनी स्मॉल guys, only 1 minute is left for this session, I got a pop-up, let me stop। Do you guys need a break or should we continue quickly guys? Continue. Continue. Okay, we'll continue with the same link, we are joining immediately, I'm stopping the session। Okay.